Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel Physics by GS for you. Okay, तो देखो students previous class से पढ़ाई थिला cells in parallel. Okay, so आज हमें देखिबा ଗୋଟେ new topic that is EMF. वहाँ इतना देखो previous class से पढ़ावा बोली EMF E dot M dot F. Okay students, EMF. तो EMF माने कौन देखो electromotive force. तर full form हला देखो electromotive force. Electromotive force. Okay, EMF for full form kona electromotive force. Then first we have to know the definition. We have to know the definition of EMF or electromotive force. देखो definition, work done per unit charge, work done per unit charge, work done per unit charge to take the charge around the circuit, to take the charge around the circuit is called electromotive force. It's called electromotive force. देखो स्टूडेंट वेरी सिंपल, electromotive force देखो work done per unit charge. Okay, very important. Work done per unit charge to take the charge around the circuit is called electromotive force. माने work done per charge is equal to कौन? That is EMF, electromotive force. तो फॉर्मूला कौन हबो देखो, that is E dot M dot F. फॉर्मूला हबो W by Q, work done per charge. Work done per unit charge to take the charge around the circuit is called electromotive force. EMF रो फॉर्मूला कौन? W by Q. This is the main formula. EMF is equal to W by Q. देखो स्टूडेंट्स, EMF is equal to W by Q. Okay, this is the definition. The work done for unit charge is called electromotive force. Clear? Next time we देखिबा unit of EMF. Next time we देखिबा unit of EMF. Unit of EMF. तो फॉर्मूला हैला EMF रो फॉर्मूला हैला देखो W by Q. This is the formula. Then so first हम SI system में देखिबा, for SI system, then for CGS system. First we have to know the SI system. देखो तो EMF रो फॉर्मूला W by Q माने कौन है उधर? W माने work done joule per coulomb. This is the SI unit of EMF. This is the SI unit of EMF, joule per coulomb. Next हम CGS से देखिबा EMF रो unit. तो फर्स्ट ESU रे देखो, ESU then for EMU. Okay, ESU then for EMU. Okay, तो कौन हबो देखो EMF per unit जूल माने कौन ESU रे हबो देखो CGS रे org, जूल रो org हुए org by start coulomb. coulomb रो start coulomb जानि छ ESU सिस्टम पई org by start coulomb से बड़ा EMU रे कौन हबो देखो EMU रे हबो org by coulomb रो कौन हुए of coulomb, org by of coulomb. एटा होची EMF रो यूनिट देखो CGS unit for EMU system. देखो SI रे हला जूल पर coulomb, CGS रे हला CGS system ESU पाई org by start coulomb, then CGS system EMU पाई हला electromagnetic unit पाई, that is org by of coulomb. Okay, ESU माने कोन electrostatic unit. Clear? नेक्स्ट हम देखिबा डायमेंशन. तो डायमेंशन का से समान हबो देखो, डायमेंशन समान हबो देखो आगु पढ़ाई छी ऑलरेडी, that is dimension of EMF. Dimension of EMF is same as dimension of potential difference. Dimension of potential difference V जोटा dimension of potential difference और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो एटा समान. डायमेंशन ऑफ EMF इज इक्वल कोन हबो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V. V रो डायमेंशन पढ़ाई छी आगु देखि दब स्टूडेंट जो माने देखिनो आगु वीडियो देखि दियो. तो नेक्स्ट हम देखिबा internal resistance. नेक्स्ट हम देखिबा internal resistance. Internal resistance of a cell. Okay, internal resistance ଗୋଟେ सेल पा internal resistance देखो तर सिंबल टा कोन स्मॉल r आगु पढ़ाई छी प्रीवियस क्लास रे. डेफिनेशन कोन हबो देखो definition of internal resistance.
तो कौन हम डेफिनेशन देख द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफर्ड OFFERED the resistance offered by the electrolyte देखो the resistance offered by the electrolyte of the cell कहार of the cell the resistance offered by the electrolyte of the cell the resistance offered by the electrolyte of the cell when electric current passes through it when electric current passes through it is known as internal resistance is known as internal resistance of the cell internal resistance of the cell देखो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल the resistance of देखो the resistance offered by the electrolyte कहार of the cell the resistance offered by the electrolyte of the cell when electric current passes through it is called known as called as internal resistance of the cell okay students देखो definition देखी दियो the resistance offered by the electrolyte of the cell when electric current passes through it is known as internal resistance of the cell okay next हमें देखिबा the derivation formula देखिबा internal resistance रो formula देखो if capital E and V देखो if capital E and V be the E माने कोन EMF जानिछो electromotive force if capital E and V be the EMF and potential difference of the cell कहार cell रो potential of the cell देखो स्टूडेंट्स if E and V be the EMF E माने होची EMF V माने कोन potential difference of the cell then कोन आबो देखो V रो फार्मूला गुटे फार्मूला अछि देखो V is equal to E minus IR give equation 1 very important equation 1 देथो potential फार्मूला कोन E minus IR E माने होची त मोर EMF I माने होची करंट R माने होची कोन internal resistance V माने potential difference ओके एबे देखिबा करंट I रो फार्मूला कोन करंट I रो फार्मूला जानि छ करंट I रो फार्मूला कोन total EMF by total resistance यो से पढ़ाई छी देखो total EMF by total resistance तो I रो फार्मूला कोन देखो total EMF माने कोन E नै छु देखो E माने EMF total resistance कोन हबो R plus R हबो देखो R plus एटा कोन external resistance R माने external resistance R माने कोन internal resistance सबले मन रखो R and R is in series अछि देखो एटा R in series माने R and R is in series connection is in series ओके ये फार्मूला मन रखो एटा कोन करबा देखो एटा इक्वेशन 2 दे दियो इक्वेशन 2 दे दियो I is equal to E by R plus एटा को कोन करबा इक्वेशन 2 फुल इक्वेशन एटी पुट कर देबा I रो जगह पुट कर देबा पुट दिस लिखि दियो using very simple using equation 2 in equation number 1 we get formula put बोले कोन हबो देखो that is V is equal to E minus I जगह पुट करो that is E by R plus R into R अछि देखो I जगह पुट हला E by R plus R into R अछि देखो into R solve this solve कला पर आंसर बाहरी बदा solve this then V is equal to then eta common आसीबो देखो कोन हबो एटी 1 minus R एटी मल्टीप्लाई हबो R by R plus R देखो स्टूडेंट्स 1 minus R by R plus R एबे R plus R एलसीएम जीवो V is equal to E then R plus R एलसीएम नियो R plus R एलसीएम नै जो then R plus R minus R then plus R minus R cancel each other देखो plus R minus R cancel each other then कोन रहिला V is equal to रहिला देखो ER by R plus R देखो स्टूडेंट्स V इक्वल कोन होला ER by R plus R then क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो दैट इज इट 80 मल्टीप्लाई हिजबो V into R plus R is equal कोन होला ER देखा इट 80 मल्टीप्लाई होला V into R plus R is equal to ER then VR plus VR is equal to ER
ओके देन एटा को सियारे नहीं जाओ दैट इज VR इज इक्वल टू ER माइनस VR ओके एटी कॉमन कोन कोन आसीबो और VR इज इक्वल टू R कॉमन आसीबो E माइनस V और ये R रो मूल्य कोन हला R रो वैल्यू देखो R into E minus V by V. This is the answer. This is the final answer. Expression for internal resistance. Equation 2 दे दियो. This is equation number 2. देखो. This is the final expression. Small r माने कौन internal resistance. Small r माने कौन internal resistance का formula कौन capital R into E minus V by V. Okay students. सब लोग मनोकर internal resistance और unit हला R हला unit हला ohm. Ohm okay. Ohm symbol हला ohm. R unit हला ohm. Equation 2 shows the expression for लिखी दियो equation 2 shows the expression for what internal resistance expression for internal resistance okay students next class से पढ़ीबा हमें Kirchhoff law मन रखो Kirchhoff law टू टाइप KCL and KVL KCL माने होची Kirchhoff current law और KVL माने होची Kirchhoff voltage law next class से पढ़ीबा ओके स्टूडेंट्स ओके जदि क्लास वीडियो जदि भल लागुछि माने काइंडली लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियो कोन पयना वीडियो रो टाइमिंग ठीक रहउनी हला केते बेले सकाळे आछि केते संध्या आछि तो बेल आइकन को दबाई देले कोन हबो ना वीडियो तुमबा को ऑटोमेटिकली पळै जिवो ओके स्टूडेंट्स ओके जदि क्लास वीडियो जदि भल लागुछि माने काइंडली शेयर कर दियो समस्त को शेयर कर दियो प्लस 2 फर्स्ट पिला माने पिला पान को पाक शेयर करो प्लस 2 सेकंड पिला मान को भी शेयर कर दियो ओके Okay students, bye.